Hello friends, today we will start new chapter Reproduction in Organism. स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, वाइट बोर्ड का मैंने ऑर्डर दिया था, तो लॉकडाउन एक्सटेंड की वजह से वो भी डिलीवर नहीं हो पाया। जैसे आएगा मैं बोर्ड से कंटिन्यू करूँगा, तब तक मैं ऐसे ही स्टैंड से पढ़ा सकता हूँ। और सेकंड चीज़ कि मैं वीडियो को एडिटिंग ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरा टोटल फोकस हमारे कंटेंट पे रहेगा। कंटेंट को मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊँगा। कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा तो आप अच्छा लिखेंगे और अच्छे मार्क पाएंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस मेरा कंटेंट पे रहेगा, ना कि एडिटिंग पे। एडिटिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, कंटेंट अच्छा रहेगा तो सब अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। So friends, firstly we will explain two terms. First one is life span and second one is life expectancy. So what is lifespan? Lifespan means the time period from birth to death. The time period from birth to death is called lifespan. What is the life expectancy? The number of individual can expect to the life, that means in number, means the number of year of an individual can expect to the life based on average life span. तो लाइफ स्पैन क्या होता है? द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. एंड व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ईयर, मीन्स एक कोई इंडिविजुअल है, जैसे ह्यूमन बींग है, तो उसका एक एवरेज लाइफ स्पैन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एक हमने एवरेज लिया है कि लिविंग बींग का इतना होता है, तो उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. अब एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन है 56 ईयर इंडिया में, और जापान में कितना है आप बताइएगा. और अगर हम बात करें एलिफेंट, तो इसका है 65 to 75 ईयर. अगर हम बात करें रोज की, तो इसका है 5 to 7 ईयर. अगर हम बात करें डॉग की, तो इसका है 20 ईयर. ऐसे करके, और ऐसे करके ढेर सारे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में. एक बार बुक ज़रूर देखिएगा आप लोग. अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की.
So what is reproduction? It is defined as production of young ones from parent cell. Okay. So now question arises, what is the need of reproduction? So what is the need of reproduction? So why we need reproduction? So there is 3 points you have to remember: continuity of generation, continuity of generation, second, continuity of variation, and third, maintenance of population. These 3 points are important. Why we need reproduction? First point is continuity of generation. That means कि अगर कोई स्पीसीज़ है, अगर वो कंटिन्यू जनरेट नहीं रहा है, उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक्सटिंक्ट ना हो, उसकी कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएशन। जैसे अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल का गैमेट क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन से क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा सूटेबली लाइफ कर सकता है, और मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन आप लोग समझ रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। What is the process? So process, there are mainly 4 process. First is replication of DNA. Second is division of cell. Third one, growth and development. Of gamete. Fourth one, metabolism and maintenance. So how reproduction occur? What is the process? There are 4 process. First is replication of DNA. In this process, there is replication of DNA take place. You have to study more detail in chapter 6. Here what you have to remember, only the process, what process occurs. The first process is replication. Second is division of cell. You have to know, you study in class 11th. There are 2 types of division, mitosis, meiosis. You have to study, that is the division of cell. Third, growth and development. Division means karyokinesis, cytokinesis. After the division, there is growth and development of gamete take place, and also it required energy, and that's in catabolism, catabolism and anabolism, and together it is called metabolism. Okay, so
these are the some introduction. अब मैं एक बार आपको हिंदी में अच्छे से बता देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मैंने दो चीज़ बताया, लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ स्पैन मतलब कि ये टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नॉर्मल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमने बताया। तो इसमें एक इंडिविजुअल कितना एवरेज लाइफ स्पैन को जीता है, सर्वाइव करता है, वह उसका क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताया ह्यूमन बीइंग का। इंडिया में जो ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ स्पैन है वो 56 ईयर है। जापान में कितना है आपको बताना है। सेकेंड, एलिफेंट को मैंने बताया 65 to 75 ईयर। रोज को बताया 5 to 7 ईयर। डॉग को बताया 20 ईयर। उसके बाद मैंने बताया रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम पेरेंट सेल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक। अब रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत हुई, क्या नीड है इसका, तो 3 पॉइंट मैंने बताया, कॉन्टीन्यूटी ऑफ जनरेशन, कॉन्टीन्यूटी ऑफ वेरिएशन और मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्टीन्यूटी मैंने क्या होता है कि अगर कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्पीसीज़ को एक्सटेंड हो जाएगा, उसका नंबर जब डिक्रीज करने लगातार, तो इसलिए एक्सटेंट ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने वेरिएशन का बताया था, फिर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन बताया था। अब प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें 3-4 प्रोसेस हैं। पहला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि आपको पढ़ना है चैप्टर 6 में मोर डिटेल में। डिवीजन ऑफ सेल आपने 11th में पढ़ा है, माइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब और डिवीजन ऑफ सेल के बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है उसका, और डेवलपमेंट होता है। उसके लिए क्या ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत होता है, तो वो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से होता है, टुगेदर उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। दैट्स ऑल। नाउ 2 important term. First term is heteropairous and second term is semelparous. So what is heteropairous? They reproduce more than one time during lifespan. Means what is heteropairous? Those organisms that reproduce more than one time during lifespan is called heteropairous. Very important term. So what is semelparous? It reproduce only one time during lifespan. They are not die after reproduction. They are die after reproduction. Example, human being. You have to write 1 to 2 example from oneself. Here example is salmon, SALMON, salmon. Grain crop. You have to write more example from oneself, etc. Okay, you understand? Heteropairous, semelparous. What is heteropairous? Those organisms that reproduce more than one time during lifespan.
सेमल्पेरस इट रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, मतलब हेटेरोपेरस मतलब ये अपने लाइफ में एक बार से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेमल्पेरस जो होता है वो लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। हेटेरोपेरस जो होता है वो रिप्रोडक्शन के बाद डाई नहीं करते हैं, लाइव रहते हैं, और सेमल्पेरस जो होता है वो डाई कर जाते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। एग्जाम्पल इसके थे, उसके एग्जाम्पल क्या थे, ह्यूमन बीइंग, और 2-3 एग्जाम्पल आप अपने से लिख लीजिएगा। और सेकंड था इसमें सेमल्पेरस में साल्मन, ग्रीन क्रॉप, और एक आध एग्जाम्पल आप अपने से लिख लीजिएगा। नाउ we will discuss types of reproduction. Types of reproduction. We all know from earlier classes there are two types of reproduction. First is asexual and second one is sexual reproduction. Now we will learn some more characteristics of sexual and asexual. So asexual also divided into 3 types. What is it? First one is fission, second one is budding, third one is fragmentation, fourth one is regeneration. First, second, third and fourth. Fission are also based on plane. It are also 4 types. First, simple fission, second, longitudinal, third, oblique, and fourth one is transverse. Now we will discuss some characteristics, you can say. Characteristics of asexual and sexual reproduction. एक ही साथ डिस्कस करूँगा, आप इसको डिफरेंस भी समझ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हियर asexual reproduction, and here sexual reproduction. So first point, they are uniparental. They are biparental.
means uniparental. uni मतलब one, parental मतलब समझ रहे parent मतलब there is only requirement of one parent and here it is the requirement of biparent, दो parent की जरूरत है. Second, here no fertilization occur. Here fertilization occur. What is fertilization? We will discuss later. And third point, no zygote formation take place. Zygote formation take place. Now one more term is clone, very important term, clone. What is clone? So what actually in asexual reproduction we will write in asexual reproduction the parent cell is similar to daughter cell and that is called clone. Here fusion of gamete. Fusion of gamete means gamete, these are the specialized cell. Okay, so here fusion of gamete take place. That means fusion gamete means sperm from male and ovum from female take place. This it is biparental, that's why offspring is not same. Okay, that are some points, you can say characteristics are different between asexual and sexual reproduction. Now what we will discuss, fission. Now we will discuss more detail asexual reproduction. So as I told earlier here, asexual are four types: fission, budding, fragmentation, degeneration. Fission are also four types: simple, longitudinal, oblique, transverse. How this classification occur? Based on plane. How we cut. So it is based on plane. Now asexual reproduction is clear. Here we earlier told it is uniparental, no fertilization occur, no zygote formation occur, clone formation occur. So that's are the point that you included in asexual reproduction. Now also it is classification. You
conclude in asexual reproduction. We will now elaborate that points: fission, budding, fragmentation, regeneration. Okay, so what is fission? What is fission? So here it is a type of asexual reproduction in which the body of individual, the body of parent cell, you can say parent cell, divided into two equal halves or two equal daughter cell. Okay, so there are also fission are two types: fission two types, binary fission, and another is multiple fission. In this, body divided into equal halves. Multiple fission, here karyokinesis, due to karyokinesis, large number of spores or daughter cell form. Now we explain the types of binary fission. As I told earlier, it is 4 types. First one, simple binary fission. Second one is longitudinal binary fission. Third one is oblique binary fission, and fourth one is transverse binary fission. In simple binary fission, in simple binary fission, division occur via any plane. मतलब किसी भी प्लेन से जब डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन. सो व्हाट विल राइट, डिवीजन ऑकर थ्रू एनी प्लेन. Here what is the example? Example is amoeba, amoeba. Here in longitudinal, division of body through longitudinally. Longitudinally means, suppose it is body and we cut from like this, from half from this, मतलब इसको ऐसे 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 आधा कट करेंगे तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल. मतलब ऐसे ब्रेक करेंगे, जो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल. इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल यूग्लिना. लॉन्गिट्यूडिनल ना
from cut like this, from half we cut like this. You agree now oblique. So here division of body through obliquely. For example, creatium. Obliquely means like this. Suppose it is in a body, so longitudinally means from 90 degree we cut. Obliquely means from any side except longitudinally, like this from any plane. Okay, and now last one is transverse. Division of body through transversely. For example, paramecium. Transverse means like this. When we cut, suppose it's in body, when we cut like this here as. Okay, that is a transverse. Now, as we know, fission are two types: binary fission and second one is multiple fission. In this karyokinesis takes place and large number of nuclei form, and from that nuclei spores are formed, and from that spores large number of daughter cell are formed from the parent cell. So what we can say, in multiple fission karyokinesis take place, and in multiple fission karyokinesis take place and large number of spores are formed. Large number of spores are formed, and from that spore large number of daughter cell form. Through multiple fission. Now what we will discuss here, 3 or 4 important terms. First term, cyst formation. Second one is incestation. Third one is cysted individual, and one more, first one is sporulation. Second one cyst formation, third incestation, and fourth one is cysted individual. So what is sporulation? Sporulation means nothing, it is only formation of spores
formation of spore is called sporulation. Okay, what is cyst formation? So cyst formation, we will draw a diagram for better understanding. एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए. What is this? It is amoeba. Okay. Through pseudopodia, it form during unfavorable condition. It form 3 hard covering layer. Okay, and that 3 hard covering layer is called cyst. Okay, what is incestation? It is the phenomenon in which cyst means during unfavorable condition amoeba form 3 hard layer covering. That covering called cyst, and phenomenon is called incestation, and that amoeba is called cysted individual. Clear or not? What is cyst formation? So you write during unfavorable condition amoeba withdraw 3 hard layer called cyst formation. Okay, what is incestation? Phenomenon in which cyst formation take place, called incestation. What is cysted individual? Here amoeba is called cysted individual. So it is over today's lecture. Tomorrow we will discuss more important topic like phases of life cycle, like birth, juvenile phase, reproductive phase, and budding. Also the remaining budding, fragmentation, regeneration. After that we will started sexual reproduction, some more topics. Okay, phases of reproduction and fertilization, menstrual cycle, menstrual cycle. That means tomorrow we will completed chapter 1. आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके. कोई डाउट होगा तो क्लियर करिएगा, पूछिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.